So we start with the immunity and immunization, how the immunity can work in our body, how we prevent from the foreign agents. Foreign agents means bacteria, viruses, fungi, and so many other things. They can act on our body and how we can prevent through the immunization and immunity. What is the immunity? Being a student, we are able, after this lecture, we should be explained the immunity and related terms. We should be explained the immune response. We should be explained the lymphocytes and its components, different cells and antibodies, how they work in our body. Already we discussed in the previous lecture, you have idea that there are two types of immunity. One is the innate immunity, other is the acquired immunity. Innate immunity is the non-specific type of the immunity, how it works, how it can prevent the foreign invading agents to our body. Being a student, we are able to understand how the acquired immunity can work in our body and how the innate immunity are non-specific type of immunity. It is a natural immunity which is present in our body and how it can prevent our body from the invading agents. These are maybe fungus, these are maybe bacteria, these are maybe viruses, these are maybe so many pathogens are other organisms. Understand? So, what is the innate immunity? Hey, kya? Innate immunity or natural immunity is the inborn capacity of our body to offer resistance to pathogens and their toxic products. क्या मकसद है ऑब्जेक्टिव क्या है इट इज द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू ऑफर रेजिस्टेंस प्रिवेंट करता है ऑफर देता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन और फॉरेन इन्वेंडिंग एजेंट्स and toxic products. It is due to genetic and constitutional makeup of an individual. Understand, beta? This is the definition of innate immunity. How it can prevent? Which is the mechanism of the innate immunity? These are the, like when we think in a previous lecture में मैंने बताया था कि skin is the first line, work as a first line of defense. These are the mechanical barrier of our body. They prevent the invading microorganisms and provide the defense to our body, underlying tissue, underlying organisms, underlying organs. This mechanical barrier work, how intactness is essential is that the skin is intact. What happens when there is injury? What happens there is a tissue damage at that level that causing the entry of the microorganisms. But intact skin work as a mechanical barrier, work as a first line of defense. It is a part of the innate immunity. And second is the surface secretion. Already we discussed, but we revise. You understand, you have idea what happened in the innate immunity and what are the components of the acquired immunity, how they work. Surface secretions constitute one of the important mechanisms of innate immunity. These includes secretions, sebaceous glands of the skin, secretions of sebaceous glands, which contain both saturated and unsaturated fatty acids that kills many bacteria and fungi. Saliva, constantly produced in the mouth cavity, having a different enzymes, hormones, digestive parts, having an inhibitory effect for the proliferation of the different microorganisms in the oral cavity. Gastric juices, the pH, acidic pH, prevent acidic environment of the stomach, can prevent the different microorganisms, microbes which are invading, they made our intestinal tracts. Our tears contain the conjunctival sac mechanically wash away the particles and the hydrolytic enzymes. They contain the hydrolytic enzymes
lysozymes present in the TS can destroy most of the microorganisms. First क्या, mechanical barrier like skin, surface secretion जिसमें आता है saliva, gastric secretion, sweat secretions. They are tears. They are contributing as a part of the innate immunity. Understand? Third is the humoral defense mechanism. Humor means water. Provide inevitability by the non-specific microbicidal substances present in the body fluid. How the lymph nodes and blood is a work as a humoral. These are the products which are work as a humoral defense mechanism. Lysozymes, basic polypeptides, complements, parts of the complement. ये discuss करेंगे. Parts of the complement system, proteins of the complement system, interferon, the having antiviral activity discuss करेंगे. ये हैं part of the innate immunity, how they can prevent our body from the different invading agents. These are maybe viruses, these are maybe fungi, these are maybe bacteria, these are maybe parasite or so many others. These are third is the humoral defense mechanism. Fourth is the cellular mechanism. जैसे example देते हैं हम WBC is the part, it is the work as a policeman, understand? Policeman, work as a army, work as a ISI, work as a defensor. How they defend? They can phagocytize. How they can phagocytize? By the different cells, mostly neutrophils. Neutrophils are occupied the 70% of the total WBC population. Understand better? 70% means these are the more motile, more abundant, more in concentration, and the monocyte macrophage system means they having a more ability to engulf the phagocytize. What is the phagocytosis? We will discuss. Okay, first you learn and understand the different parts of the immune system. Cellular mechanism for defense. Understand? Natural killer cells. Second is the natural killer cells. These are the subpopulation of the lymphocytes. Eosinophils, granules contain enzymes and toxic molecules that act against larvae of the elements. जो worms होते हैं, worm parasite होते हैं. The concentration of the different cells is increased, rise in the different conditions. ये बात समझ में आई? Understand? These are the four basic mechanisms. अदर भी हैं types, मगर यहाँ four basic mechanisms through these types the innate immunity works in our body. Second is the most important type of immunity is the acquired type of immunity or adaptive type of immunity. Hey, kya acquired? The resistance that an individual acquired during his lifetime is known as the acquired or adaptive immunity. When the exposure of the organisms, when the exposure of the microorganism, when the exposure of the fungi, when exposure of toxins, what happens? They produce these are work as antigen and they can produce in our body. Our body can produce the antibodies against these antigen. So that we call this is a specific type of immunity or antigen specific immunity, and maybe antibody or cell mediate. It is of two types. इसके दो types हैं. क्या है? Acquired immunity के कितने types हैं? Two types. Active and passive. बस describe हो गया कि immunity क्या है? Immunity के दो types हैं. Innate immunity, acquired immunity. फिर acquired immunity है क्या? ये specific type of immunity है. When there is exposure to the antigen, what happens? These antibodies are formed. These antibodies are formed due to the action. These formed from the B cells, but also there is the regulating factors which regulate the help in the regulation of B cells for the further production of these. जैसे T helper cells, जैसे T helper cells हैं, clonal expansion. So
क्लोनल पहले क्लोनल एक्सपेंशन, क्लोनल क्या है कि वही उसका सेम फीचर, सेम सेम क्लोन, सेम टाइप, जैसे बी lymphocytes हैं, B1, B2, B3, B4 and so many fourths, they are formed against the different types of antigens. Understand? तो acquired immunity के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इज acquired by the synthesis of antibodies, humoral immunity के, and production of immunocompetent cells. Cell mediated immunity, immunocompetent cells कौन थे? Cell mediated by the individual's own immune system in response to an antigenic stimulation. फिर इसके टाइप्स हैं नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल and artificial active immunity. Active immunity can be induced naturally or artificial. Active immunity कैसे enter करते हैं? It may be naturally induced, naturally or artificially. How? Natural active immunity क्या है? Natural active immunity result either from a subclinical or clinical infection. जैसे for example, a large majority of the adults in the developing country possess natural active immunity against the poliomyelitis virus due to repeated subclinical infection with poliovirus during childhood. समझ में बात है बेटा? Natural active immunity, how it is developed? Due to the exposure. Artificial active immunity क्या है? Natural immunity क्या है? Natural active immunity result either from a subclinical or clinical infection. For example, इसका example पढ़े में पढ़ा, a large majority of the adult in the developing countries possess natural active immunity to poliomyelitis due to repeated subclinical infection and with poliovirus during childhood. Artificial active immunity, second is the artificial active immunity क्या है? Artificially active immunity is induced by introducing antigen in the body in the form of vaccine, and this process is called active immunization. क्या कहते हैं इसको? Active immunization. Artificially active immunity is induced by introducing antigen in the body in the form of vaccine. ये जो vaccine है, it is the artificial active type of immunity. These vaccines are preparation may be from the live, may be from the killed vaccine. These are the two types. Further two types. Lived है, killed है, live vaccine है, killed vaccine है, toxoid है. Microorganisms of their products, examples of vaccine are bacterial vaccine like polio vaccine. Passive immunity, second is the एक होती है इंड्यूस आर्टिफिशियल, नेचुरल, और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव के टाइप्स यहाँ है. थर्ड सेकंड इज द acquired का passive immunity. Passive immunity refer to the immunity that is transferred to a recipient in a ready-made form. इसमें उसका कोई कोई रोल नहीं इम्यून सिस्टम का, बॉडी का कोई रोल नहीं, रेडीमेड फॉर्म में मिलती है. फिर further natural artificial passive immunity is the transfer of ready-made antibodies from the mother. जैसे एग्जाम्पल देते हैं प्लेसेंटल मदर से बच्चों में ट्रांसप्लेसेंटल सिक्रेशंस होती हैं एंटीबॉडीज की. They can prevent the fetus from the invading agents at the time of birth up to the 1 month 2 months vulnerable age होती है. ये बच्चों में अक्सर बच्चे ट्रांसप्लेंटल सिक्रेशंस होती है. और दूसरा इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रम, ब्रेस्ट मिल्क. हम कहते हैं प्रमोट करते हैं कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दें. क्यों? Because the colostrum contain the antibodies, they can enhance our immune system, they can prevent our newborn babies, newborn generation from the invading agents. Due to that, we promote the breastfeeding.
अंडरस्टैंड नेचुरल आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, लाइक एग्जांपल दिया गया है इन ए फीटस द इम्यूनोग्लोबुलिन जी। आएंगे हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। उसमें बड़ा जो प्लेसेंटल एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज है, आर ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा इन द फीटस। अंडरस्टैंड? After birth, immunoglobulins are passed to the newborn through breast milk in the form of colostrum. Human colostrum क्या है? Is rich in the immunoglobulin A antibodies which are resistant to digestion in stomach and small intestine. Understand? Other antibodies हैं, को एंटीवायरल एक्टिविटी है कोलेस्ट्रॉल की, वो किसको प्रिवेंट करता है? न्यूबॉर्न पॉपुलेशन को। हम इसी वजह से प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट मिल्क। सेकंड, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर्ड टू द रिसिपिएंट बाय इंजेक्टिंग रेडीमेड फॉर्म। जैसे अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो हम इंजर्ड पर्सन को कहते हैं कि आप एटीएस लगवाओ, एंटी टेटनस सीरम। एटीएस आफ्टर टेस्ट डोज हम कहते हैं कि भाई सीरम लगाओ कि इट प्रिवेंट फ्रॉम द टेटनस टॉक्साइड, इट प्रिवेंट फ्रॉम द टेटनस। ये भी आर्टिफिशियल टाइप ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी by a recipient by injecting ready-made antibodies. This is done by administration of hyperimmune serum of man or animal uh, that may be taken from the source human or animals. Examples, इसके अच्छे examples दिए गए हैं। 3 examples जो हमें यूज करते हैं। ATS का एग्जाम एंटी टेटनस सीरम, ATS इंजेक्शन है in the form of ATS injection, anti-diphtheric serum ADS in the form of ADS, and anti-gangrene serum AGS. Understand? These are the type of artificial passive immunity. Ready-made antibodies are introduced in the human body. Understand? हमने पहले डिस्कस की है एंटीजेंस, और अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिपेंड करती है एंटीजन एक्सपोयर पे। एंटीबॉडीज बनती हैं प्लाज्मा सेल से when the antigen expire. What happen when there is exposure to the antigen in our body? मैंने पहले भी बताया था कि एंटीजन having two types. One is the internal foreign, जिसे हम, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, या जिसे कहेंगे हम इंटरनल सेल्फ फॉरेनर्स, जो बाहर से हैं। एक जो अंदर बने, दूसरे बाहर बने, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल और दूसरे फॉरेनर्स। अंडरस्टैंड? एंटीजन है क्या? Antigen are substance that can stimulate an immune response. Immune response के components मैंने clear किए थे previous lecture. In the body, most antigens are protein. Most antigens are proteins होती है, but some are carbohydrate, lipids, and nucleic acid. The specificity of an antigen is due to a specific area of molecule called determinant sites or epitopes. Clear? ये प्रोटीन पॉलीसेक्राइड्स की बनी एपिटोप साइट्स होती हैं। द एपिटोप्स कैन बाइंड टू स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स कॉल्ड पेराटोप्स ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये साइट्स प्रोवाइड्स करती हैं एंटीजन सरफेस पे। एपिटोप्स दे हैव मल्टीपल साइट्स, दीस आर प्रोटीन सबस्टेंस आर फॉर्म। एंटीजन प्रोटीन्स भी हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड भी हैं। मगर ये जो एपिटोप्स हैं, मैंने ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसको बताया था, एपिटोप्स हैविंग ए these are the proteins, they provide the site determinants for what? Paratopes of the antibodies molecule. A pure protein can have several epitopes and thus can stimulate formation of many distinct antibodies. Understand? इसके फैक्टर्स, सम फैक्ट्स अबाउट एंटीजेनिसिटी। क्या इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन वो हो, वही है जिसमें पावर ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी। रिस्पॉन्स इज डिटरमिन्ड बाय किस फैक्टर्स पे, कौन से फैक्टर्स पे? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, foreignness of the molecule, maybe internal, maybe
chemical structure of the molecule, susceptibility of the substance to tissue enzymes, genetic constitution of the host and dosage, route and timing of administration. These are the some facts about the antigenicity of the antigen. दूसरा आता है टर्म बड़े में बड़ा एंटीजन. हम सुनते आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, इम्यून सिस्टम हमारा एनहांस हुआ, इम्यून सिस्टम ने काम किया, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. तो फर्स्ट हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए एंटीजेंस क्या हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं, फिर जाके इनके एंटीबॉडीज क्या हैं. एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, और गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, which are produced in response to antigenic stimulation. These react specifically with the antigen would stimulate their production. Understand? एंटीजन होगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी. एंटीबॉडीज वी आर फ्रॉम द बी सेल्स. टी सेल्स भी, टी लिम्फोसाइट्स भी हेल्प करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया गया हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? प्रोलिफरेट करते हैं, एनहांस करते हैं बाय सीक्रेटिंग द इंटरल्यूकिन 1 सब्सटेंस. इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 भी फेगोसाइटाइज्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब जब डिग्रेडेड होते हैं in the form, they also release some different substances, also they enhance. But helper T cells जो T lymphocytes हैं वो B cells के रेगुलेटर्स हैं कि वो एंटीबॉडीज फॉर्म करें. फिर आते हैं भाई एंटीबॉडीज बी सेल्स के दो टाइप्स हैं. एक दो टाइप्स हैं, प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स, मेमोरी सेल्स. ये इसको भी क्लियर करते हैं, मगर पहले एंटीबॉडीज को क्लियर. All antibodies are immunoglobulins, ये clear. But all immunoglobulins are not antibodies. ये बात समझ. Immunoglobulins have been divided into 5 distinct classes, जिसे कहते हैं IgG, immunonemly कहते हैं GAMD. मैं अक्सर फॉर्मूला GAMED. हम स्टूडेंट थे तब भी ये कोई छोटा बुक आता था, उसमें लिखा हुआ GAMD. हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज हम याद करते हैं. immunoglobulin G, GAM, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E, immunoglobulin D. ये गेम डी के नाम से तो फिर हमें 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स याद हो जाती है. और फिर जब एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन की बात आती है तो फिर हम जब प्रीवियस लेक्चर में क्या कर भाई नेचुरल पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो है उसमें एक एग्जांपल आया था इम्यूनोग्लोबुलिन जी का. एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस. फॉर व्हाट? टू प्रिवेंट द डिफरेंट इन्वेडिंग एजेंट्स. इम्यूनोग्लोबुलिन ए ट्रांसफर होती है फ्रॉम द मदर to the newborn baby through the colostrum. These are the examples. Means they're having a antibodies का पहले हमें concept होना चाहिए antibodies हैं क्या, फिर हमें उनके types आने चाहिए. antibodies KMT, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin D, immunoglobulin E. और immunoglobulin A किस response में काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ये acute response में, acute phase response में. इम्यूनोग्लोबुलिन डी इन्हांस करते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन ई जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो ये हम इन सारा चीज़ों इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिस्कस करते हैं. एंटीबॉडीज को हम डिस्कस करते हैं. अंडरस्टैंड? तो एंटीबॉडीज काम कैसे करते हैं हमारे बॉडीज में, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में कैसे काम करते हैं? एक तो डायरेक्ट काम करते हैं एंटीजन, दूसरा करते हैं थ्रू द इनडायरेक्ट एक्शन बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, रिलीज ऑफ द सब्सटेंस. वो बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. ये बात यहां तक क्लियर हुई होता? स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडीज की? इम्यूनोग्लोबुलिन हैज बीन स्टडीड एक्सटेंसिवली एंड सर्व एज ए मॉडल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इसके दो पोर्शंस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के. एंड इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 heavy chains and 2 light chains. These are held together by sulfide disulfide bond.
एक रफ पोर्शन होता है, दूसरा स्मूथ पोर्शन होता है, एक FC फ्रेगमेंट क्रिस्टलॉइड पोर्शन अटैच होता है, दूसरा होता है फैट फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन होता है। ये एंटीबॉडीज के पोर्शंस हैं व्हेन यू गो इनटू द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। ये काम कैसे करती हैं? Antibody protect the body from invading organism by two methods: by direct action, and through the complement system. दो mechanisms of the actions antibodies के through that they help in the immune system. They prevent our body against the microorganisms. Clear, beta? Types of immunoglobulins: game D, immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin A, G, A, M, E, D। फिर हम जब इनको स्पेसिफाई करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन डिस्ट्रीब्यूशन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जब इम्यूनोग्लोबुलिन बात करते हैं तो इट इज कंटेन heavy molecular weight. The most abundant class, immunoglobulin G is the most abundant of all immunoglobulins in the body, constituting approximately 75% of all the total immunoglobulins. It is distributed equally between intravascular and extravascular pools. कितना परसेंट है? 75% जो एंटीबॉडीज हैं, it comprises of immunoglobulin G and present in the both pools, extravascular and intravascular. ये बात understand करते हैं. It is also found in milk, saliva, nasal and bronchial secretion. ये प्रॉपर्टी दूसरी immunoglobulins की नहीं है. Immunoglobulin 75% means having a more major contribution in the immunity. Production कहाँ से? A little immunoglobulin G is produced during the early stage of primary response to antigen. जब कोई antigen exposure होती है, it is formed. Where from? B cells. It is a major form of antibody produced during secondary response, in which the initial IgM production gives a way to the immunoglobulin production. इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट रेस्पॉन्स में सीक्रेट होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन जी इन द सेकंड रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स हैं क्या, इनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ दे कैन आर प्रोड्यूस। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1.5 लाख टीए। इम्यूनोग्लोबुलिन इज द ओनली क्लास ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। यही एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। बीसीक्यू क्वेश्चन है, ऑलवेज क्वेश्चंस कि व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज क्रॉस द प्लेसेंटा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज द ओनली immunoglobulin that can cross the placenta and is responsible for protection of the infant during the first few months of the life. Immunoglobulin G is also found along with immunoglobulin A and milk during the first few weeks after birth. Understand? Milk से भी secret हो, मगर इतनी sufficient quantity नहीं होती। Sufficient quantity immunoglobulins A की होती है और they can having a antiviral activity, they enhance the immune system of newborn baby। इसी वजह से हम promote करते हैं कि भाई breast milk, mother should be exclusive breast milk up to the 6th age of the 6th month। Exclusive means no other thing, no other thing, only the breast milk, जिसे कहते हैं exclusively breast milk। exclusive का मतलब ये है। इसकी बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दो साइड्स होती हैं, एक एफसी पोर्शन और फैट पोर्शन, रफ और स्मूथ। FC portion, macrophages and monocyte bears FC receptors which binds to the FC portion of immunoglobulin G1। इसके टाइप्स होते हैं G1, G2, G3, ठीक है। immunoglobulin G1, G2, G3, CH3 domains। Such binding permits these cells to exhibit antibody dependent cellular toxicity। Immunoglobulin usually exhibit high affinity for antigen, leading to efficient neutralization of toxins।
Among natural killer cells, a distinct subpopulation of cytotoxic cells has been recognized, which also possess FCR or FC part of the immunoglobulin. They are capable of lysing or killing target cells and sanitized with immunoglobulin G and are killed killer cells. Platelets also possess FCR or FC portion of immunoglobulin G, leading to aggregation, degranulation and release of histamine. ये बात आपको in the next slides में clear होगी कि binding characteristics. ये first you understand the structure of the immunoglobulin G की बात करते हैं. Immunoglobulin का molecular heavyweight है, having a placental transformation, placental root के placenta के through just transfer होती है through the mother to the fetus and having a immunation, make immunity. दूसरा था immunoglobulin M. Immunoglobulin first understand करेंगे इनके distribution. Immunoglobulin constitute about 10% total serum. Immunoglobulin वो 75% और ये immunoglobulin M कितना परसेंट है? It is about 10% of the total serum immunoglobulin. In contrast, the immunoglobulin G, immunoglobulin M, because of its large size, remain almost exclusively in the serum. Immunoglobulin large size की वजह से remain almost वो दोनों pools में extravascular, intravascular दोनों pools में है immunoglobulin G, मगर immunoglobulin M it is remain in the serum and is not usually found extravascularly in the body cavities or secretion. वो secretions में भी मिलेंगे 75% क्योंकि उसकी population most abundant है, most occupying immunoglobulin है, most powerful immunoglobulin है. Immunoglobulin M having a heavy molecular weight, large size की वजह, molecular नहीं, large size की वजह से these are remain in the serum, not present in the other body cavities and secretion. Phylogenetically, immunoglobulin is the oldest immunoglobulin class. It is the only immunoglobulin which produced before birth. It is the predominant immunoglobulin produced during primary response. ये मैंने पहले बताया था कि ये primary response में secret. जब हम टाइफी डार्ट की करते हैं ना, टाइफी डार्ट को देखते हैं, उसकी टाइफी डार्ट करवाते हैं तो दो response आते हैं. एक immunoglobulin M, जब टाइफाइड फीवर में हम पहले इन्वेस्टिगेशन करवा, अभी तो एलाइजा मेथड से करवाते हैं, उसमें कंसंट्रेशन देखते हैं साल्मोनेला की कि कितना रेशो है, मगर दूसरा किट मेथड आता है उसमें हम उसके रेस्पॉन्स देखते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्स में या जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है उसमें हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन of that organism is going to become increase at the first phase. In the second phase, immunoglobulin M is going to become indicated. It appears early in the secondary response, but its level does not rise significantly thereafter. Molecular weight कितने कम है, large size है. Serum concentration of immunoglobulin is 1 to nanogram per ml. Half-life of immunoglobulin is about 5 days. और उसकी 2 weeks है. Immunoglobulin G की it is about 2 weeks है. Since they are relatively short-lived, their demonstration in the serum indicate recent infection. ये recent infection का indicator या primary response में serum की concentration में arise होता है. और immunoglobulin M indicate करता है acute phase reaction, primary response, acute phase reaction, और secondary phase reaction वो immunoglobulin G level आती हैं या chronic infection को indicate करती है. Immunoglobulin cannot cross the placenta. Immunoglobulin presence in a fetus or newborn indicate intrauterine infection और ये indicate करती है. Its detection is therefore useful for the diagnosis of congenital syphilis, rubella, and toxoplasmosis. These are different conditions, maternal conditions.
इम्यूनोग्लोबुलिन हम करते हैं, स्टार्च स्क्रीनिंग करवाते हैं मदर्स में, दे हैविंग ए प्रॉब्लम, fetus problem they may be, fetal problem they may be, maternal problem. हम टार्च इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं और ये डिस्कस करते हैं, इन द इन्वेस्टिगेट करवाते हैं. मगर efficiency wise immunoglobulin is much more efficient than the immunoglobulin in its ability to fix complement by the classical pathway. ये हम बात करेंगे जब हम इनकी कॉम्प्लीमेंट पाथवे एंटीबॉडीज का करेंगे कि एंटीबॉडीज हाउ द वर्क, हाउ हेल्प इन द इम्यूनिटी इन अवर बॉडी. एक तो डायरेक्ट एक्शन होगा एंटीबॉडीज का, दूसरा इनडायरेक्ट एक्शन होगा वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू होगा. फिर उसके पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, एक क्लासिकल पाथवे, दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे है और कुछ बुक्स में थर्ड वन पाथवे भी लिखा पड़ा है. मगर इन द गाइडलाइन हम जो क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे हम डिस्कस करेंगे. इट इज अ मोर एफिशिएंट है कैसे उसको करें. पाथवे promoting lysis and death are most ground. ये यहाँ most efficient है. This greater efficiency is due to the fact that the complementary may bind to several Fc region of the pentamer IgM. मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन की, दे आर हैविंग ए डिफरेंट चेन्स, they are attached with the disulfide bond, they are having a two portion, one is the Fc portion, other is the Fab portion. Fc portion fragment crystalloid कहते हैं, Fab portion fragment antibody antigen binding portion, Fab portion कहते हैं, fragment of the antibodies that is for the antigen binding. Thus, initiating a complement cascade and target cell lysis with a single molecule. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ आएंगे. एंटीबॉडीज की कैसे काम करती हैं इन आवर बॉडी में, डायरेक्ट एक्शन कैसे करती हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प कैसे करती हैं. दूसरा ये कि कॉम्प्लीमेंट थ्रू द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे काम करती हैं और इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्टअप करते हैं, एनहांस करते हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कौन सी हैं, डिफरेंट इम्यूनाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं और कौन से फॉर्म्स होते हैं, कैसे हम इनको. इम्यूनोग्लोबुलिन एम क्लास इफेक्टिव एग्लूटिनेशन बट इट्स ऑप्सोनाइजिंग पावर इज रादर वीक. देखो एक यहाँ एफिशिएंट है तो इस जगह पे ये डिफिशिएंट भी है, तो ये ऑप्सोनाइजिंग पावर इज वीक है और एग्लूटिनेशन इफेक्ट मोर. दूसरा टर्म आता है अक्सर कि व्हाट इज द, दूसरे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी. इम्यूनोग्लोबुलिन ए having antiviral activity, they enhance, they having a less molecular weight, they occupy 2 to 3% of total population of antibodies. Immunoglobulin E also, immunoglobulin D also. Immunoglobulin E जो होती है रेज होती है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में राइज हो जाती है. Immunoglobulin A having antiviral activity like a colostrum secret होती है with immunoglobulin G in the form of from the colostrum during the early days of the newborn baby who suckling the mother milk. First 3 days of the newborn baby's life, the milk is arise. First 3 days from the mother, that is known as colostrum, which is heavy with immunoglobulin A, immunoglobulin G in the skin. Some part, majority immunoglobulin A. Immunoglobulin E, fourth is the immunoglobulin E, and fifth is the immunoglobulin D. These are the parts of the immunoglobulin. They work. इम्यूनोग्लोबुलिन राइज जब होता है, जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन वर्म इन्फेस्टेशन होते हैं तो इनकी टाइटर राइज हो जाता है. मगर हमारे पास जो अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन ए इन प्राइमरी रेस्पॉन्स में राइज होती है और ओल्ड रेस्पॉन्स में इम्यूनोग्लोबुलिन एम. अंडरस्टैंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स. मगर एसेंशियल जो ज़रूरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आपको नाम आने चाहिए. इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG 70% population
of all antibodies, you have idea what are the root, what is the function, how they can work. जब जनरलाइज हम बात करेंगे एंटीबॉडीज की फंक्शंस की, तो वो दे आर इफेक्ट, they our enhance our immune system through the two mechanisms. One is the direct action, other is the indirect action through the complement system. तो complement system के two parts हैं, one is the classical pathway, other is the alternative pathway. हम उनकी डिस्कस करेंगे in the next. Hypersensitivity, first हम understand करेंगे different components and immune response की. Refer to an abnormal immune response which produce physiological or histopathological damage in the host. Hypersensitivity क्या है? Abnormal immune response which produce physiological or histopathological changes in the host. Development of the immune response. Development of immune response implies development of acquired immunity in the body. The immune system of the body responds to antigen by two ways. Understand? ये बात जो ही है. One is the humoral or antibody mediated immunity. Humoral हम क्यों कहते हैं? Humorous Latin word है, means it affect through the fluids, maybe blood, maybe lymph node. And second is the cell mediated immunity, that through the helper T cells, cytotoxic T cells, suppressor T cells. Due to that, we told them second is the cell mediated immunity. Clear? Development of the immune response. फिर उसके different portions आते हैं जब हम बात करते हैं. Clear? Antibodies, how they work. There are two methods. One is the direct, other is indirect. Direct करते हैं, different phases हैं. Indirect through the complement system. ये बनते कहाँ से हैं? प्लाज्मा सेल से, जो भी लेफोसाइट्स का पार्ट है. एग्जाम्पल क्या है, रोल क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी का? वही है, इट प्रिवेंट द फॉरेन एजेंट्स. दीज आर मे बी प्रेजेंट respiratory tract, intestinal tract. It precipitates in the immediate hypersensitivity type of the reaction, type 1, type 2 and type 3. Humoral immunity is also associated with certain autoimmune disease. Self antigen बने body में. And डैमेज करें. टाइप्स ऑफ ह्यूमरल रेस्पॉन्स क्या है? प्राइमरी ह्यूमरल रेस्पॉन्स है और सेकेंडरी ह्यूमरल रेस्पॉन्स. जो मैंने कहा कि प्राइमरी ह्यूमरल रेस्पॉन्स एंटीबॉडीज का, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी. सेकेंडरी ह्यूमरल रेस्पॉन्स. प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या है? प्राइमरी रेस्पॉन्स वही मैंने ऑलरेडी इन द डिस्कस. रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू एन एंटीजन which is introduced in the body for the first time. Always there is a latent period varying from 4 days to 4 weeks before the primary response in the form of a rise in the serum antibodies titer can be detected. Secondary response क्या है? Refer to the response of the body immune system to an antigen which is produced in the body on a second occurrence. Such a response occurs more quickly and more abundantly. This is because of the fact the immune system is able to retain the memory of prior antigenic exposure for long periods, immunological memory, and produce enhanced response when encountered with the same antigen for the second time. These summarize किया गया है कि barriers क्या हैं innate immunity. फर्स्ट एग्जांपल्स फिगर्स में समझाया गया कि भाई innate barriers, स्किन बैरियर है, innate immunity के टाइप्स. अंडरस्टैंड फिर स्किन म्यूकोजा, surfaces, humoral defense, cellular or humoral defense by the lysozyme, sebaceous secretions, stomach secretions, adaptive cellular humoral defense. उसमें क्या आती हैं? एंटीबॉडीज, साइटोकाइंस, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. वन आर द एंटीबॉडीज.
One are the antibodies, other cell mediates. Any question regarding to the humoral, again humoral type of immunity? Any question regarding to the topic?